Good morning, everyone. आज हमें थर्ड मॉक टेस्ट MCQs आंसर एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिस्कस करबा ई क्लास रे. आई होप समस्त टेस्ट अपियर करूथिबे एंड थ्रू दिस डिस्कशन क्लास समस्तंकर गोटे बेटर वे रे गोटे रिवीजन हे जिवो एंड जो भी पॉइंट्स मुझे कहबी जदि नोट्स रे इंक्लूड नाही देन डू नोट इट डाउन. ठीक अछि. डिस्कशन क्लास स्टार्ट करबा आगरु जस्ट लेट मी नो कि ऑडियो एंड एठी स्क्रीन रे पीडीएफ आपन को शो होउची कि नाही एंड मु एठी जहां भी एनोटेट करूची सेटा क्लियर अछि कि नाही. फर्स्ट ऑफ ऑल मते लाइव चैट रे थरे कंफर्मेशन दे दियंतु that the audio and video both are clear. We will proceed. If both the audio and video are clear or not, tell me in the live chat. ओके तो कहउचंदी कि क्लियर अछि बोली. आज रे डिस्कशन क्लास रे हम एज यूजुअल 50 टा क्वेश्चंस हमें डिस्कस करिवा वन बाय वन. करेक्ट ऑप्शन तो हमें डिस्कस करिवा ही, बाकी तीनटा ऑप्शन कोन बा इनकरेक्ट हबो ताकू भी हमें डिस्कस करिवा. आ जो गुडा प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन मु खाली तार आंसर कहि कि आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. ठीक अछि. समस्त जानिथिबे एटा हमर थर्ड डिस्कशन क्लास मॉक टेस्ट थर्ड रो. and each question mu 10 to 15 seconds debi according to the difficulty level of the question to attempt. तापरे हमें डिस्कस करिबा. First question, the doctrine of separation of powers primarily aims to. Doctrine of separation of powers जो रहिला तार primary aim कोन? First option, ensure equal distribution of wealth among the citizens, prevent the concentration of power in any one organ of the state, strengthen the powers of the executive, guarantee judicial supremacy over the parliament. आ भितरु कोटा हबो तार aim? Giving 10 seconds to answer. Try to answer in the live chat. तो आर करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी. prevent the concentration of power in any one organ of the state. आमर जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स रहिला गवर्नमेंट रो पावर एंड फंक्शन को से तीनटा डिस्टिंक्ट ऑर्गन रे डिवाइड करची. फर्स्ट होची लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर रो काम कोन? टू मेक द लॉज. देन सेकंड ऑर्गन होची एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव रो काम होची टू इंप्लीमेंट द लॉज. एंड थर्ड जुडिशियरी. जुडिशियरी कौन करे? इट इंटरप्रेट्स द लॉज. आउ ए डॉक्ट्रिन रो मेन पर्पस कौन हैला? टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर. मिसयूज ऑफ पावर अंडर दिस डॉक्ट्रिन जो पावर और फंक्शन रहला से कौनसी गोटे ऑर्गन रे कॉन्सेंट्रेटेड है कि नहीं. इट इज डिवाइडेड. सो नो सिंगल ऑर्गन बिकम्स टू पावरफुल. तो ए डॉक्ट्रिन आउ कौन प्रमोट करूची? इट प्रमोट चेक्स एंड बैलेंसेस so that जो each organ रहिले they act as restraint on the others. ठीक अछि.
Second question, which one of the following articles of the Indian Constitution directs the state to separate the judiciary from the executive in public services? आ भितर को article टा Indian Constitution रा से state को direction दिए to separate judiciary from the executive in public services. Article 50, Article 121, Article 122, Article 361. Giving 10 seconds. जो मैंने भी 1 रो बी आंसर दउचंदी एमएसपी संस्कृत स्वर्णा प्रभा absolutely correct. The correct answer will be B. Very good. Second question attempt करो. Second question answer हबो Article 50. Article 50 गोटे कोन एटा होची गोटे DPSP Directive Principle of State Policy and DPSP कहा अंडर रे आसे it comes under part 4 part IV of the Constitution and एटा कोन कोइ the state shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state. ठीक अछि तो एटा एन्श्योर कोन करछि एटा जुडिशियरी को जेतेबेले एग्जीक्यूटिव थारु अलगा करि दिया जाउछि इट एन्श्योर्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस सी एबे एग्जीक्यूटिव ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं इट एन्श्योर्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट लेवल रे ठीक अछि but article 121 8 inta option the incorrect heijibo still article 121 kono it deals with the restriction on discussion in parliament regarding the conduct of judges मानकु नै कि पार्लियामेंट रे कोनोसी डिस्कशन हेई परिबो नै आर्टिकल 122 कोन कहिछि ये कोर्ट मानकु बार करूछि फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू पार्लियामेंटरी प्रोसीडिंग्स कोर्ट माने पार्लियामेंटरी प्रोसीडिंग्स उपरे इंक्वायरी करि परिबे नाही ठीक अछि देन आर्टिकल 361 कोन आर्टिकल 361 होछि एटा प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी प्रदान करे फ्रॉम सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग्स immunity to president and governors from certain legal proceedings. Third question. The principle of separation of powers forms part of the basic structure of the constitution was laid down in which of the following cases? Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan 1975, IC Golaknath versus State of Punjab 1967, Kesavananda Bharati versus State of Kerala 1973, Minerva Mills versus Union of India 1980. आ भितरु को केस रे सेपरेशन पावर को गो बेसिक स्ट्रक्चर रो गोटे पार्ट बना गला Giving 10 seconds. 10 seconds starts now. आंसर अब सी केशवानंद भारती केस रे सुप्रीम कोर्ट एटा कहिले जे पार्लियामेंट जो पावर अछि टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर आर्टिकल व्हाट अंडर आर्टिकल 368 एटा अनलिमिटेड नो इट इज नॉट अनलिमिटेड दिस इज लिमिटेड सो किछिटा फीचर एमि जोडा की बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करंती ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से मन को चेंज करई हबो नाही एंड सेपरेशन ऑफ पावर को भी रिकॉग्नाइज करा गला एज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स under which of the following provisions are the courts barred from inquiring into the proceedings of the legislature? Article 121 and Article 211, Article 122 and 212, Article 123 and 213, Article 356 and 360.
Under which of the following provisions the courts are barred from inquiring into the proceedings of the legislature? को आर्टिकल अंडर रे कोर्ट्स माने लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग्स को इंक्वायरी करि परिबे नाही ऊपर मु डिस्कस कली सिमिलर क्वेश्चन गोटे गिविंग 10 सेकंड्स वेरी इजी क्वेश्चन Answer was Article 122 and 212. Article 122 is for Parliament. Courts माने से माने question करि परिबेनी validity of parliamentary proceedings on grounds of what? Procedural irregularity. And 212 कोन एटा होची for state legislatures. Same protection एटा provide करूची okay and ए protection provide करियर purpose कोन to ensure independence and dignity of legislative body and prevent judicial intervention or interference in its internal affairs. ठीक है जी 5th क्वेश्चन अटेम्प्ट करो The power of president to promulgate ordinances under Article 123 is an example of judicial overreach, legislative power of the executive, executive control over judiciary, delegated legislation by parliament. President रो जो power मिली जी to promulgate ordinances under Article this 123 सेटा आ भितरु काହାର example? Answer of B. Legislative power of the executive. Article 123 सी president को empower करे to issue an ordinance. An ordinance केतबळे issue करियबो जेतबळे parliament session रे नथिबो जेतबळे parliament session रे नथिबो and सेतिबळे immediate action दरकार पडुथिबो ठीक अछि तो ऑल्दो प्रेसिडेंट सी जने एग्जीक्यूटिव रो पार्ट किंतु ए जो पावर ता तांको मिलुची सेटा तांको अलाउ करूची कि सी टेम्पररी लॉज बनै परिबे टेम्पररी लॉज बनै परिबे जोडा कि गोटे नॉर्मली गोटे लेजिस्लेटिव फंक्शन देयरफॉर एटा गोटे एग्जांपल कि एटा होची गोटे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव Question number 6. Assertion. In India, the doctrine of separation of powers is not applied in its rigid sense. Reason. The parliamentary system requires ministers to be members of the legislature while performing executive function. Assertion कहला कि India रे doctrine of power गोटे rigid sense रे apply हुएनी. Doctrine of separation of powers गोटे rigid sense रे apply हुएनी. तार reason होची कि जो parliamentary system India रे carry out हुए, it requires कि तार जो ministers माने रहिले to be the member of legislature while performing executive function. Ministers मानको they have to be the member of the legislature while performing the executive function. Answer कौन हबो? दीटा देखो true. R is the correct explanation of A. Assertion and reason are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true.
କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର। କରନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ। 6 ର A କହୁଛନ୍ତି। करेक्ट अच्छी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया रे सेपरेशन ऑफ पावर एक्जिस्ट करूची किंतु गोटे स्ट्रिक्ट सेंस रे एक्जिस्ट करूनी जेमति कि यूएस रे एक्जिस्ट करूची। ठीक अछि एग्जीक्यूटिव जो माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहिले से माने लेजिस्लेचर रो ही बछा जाई थांती। दे आर ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर इटसेल्फ जोटा कि पार्लियामेंट में कहताऊ व्हिच मींस कि जो ओवरलैप ऑफ पर्सनल एंड फंक्शंस। आ जो ओवरलैप रहिला सेटा नेसेसरी इन ए पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जोटी कि एग्जीक्यूटिव से डायरेक्टली रेस्पोंसिबल टू हुम टू legislature sorry ministers से माने member of parliament थांती while performing the executive duties so दीटा जाको statement correct अछि and reason is the correct explanation of A. Seventh question, consider the following statements regarding the system of checks and balances in India. First statement, the judiciary can declare legislative enactments unconstitutional if they violate the constitution. Second statement, parliament can amend laws that have been struck down by the judiciary. Third statement, the executive is not accountable to the legislature under any circumstances. Fourth statement, legislature can impeach the judges for proved misbehavior or incapacity. आ भितरु केतोटी statement correct अछि? Only one, only two, only three, all the four. Giving 15 seconds for this.
ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कहला कि जुडिशियरी सी लेजिस्लेटिव एनाक्टमेंट्स मानकु बा लॉज मानकु अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करि परिबो जदि से माने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करूथिबे दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट जो माने पॉलिटी पढिथिबे से माने एटी रिलेट करि पारुथिबे एंड आकु कोन कोन पर्टिकुलर प्रोविजन को दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू जोटा कि को आर्टिकल अंडर आसुची आर्टिकल 13 32 and 226 under आसुची remember the articles okay second statement कहला कि parliament can amend laws that have been struck down by the judiciary जो laws judiciary ताको struck down कर देइची parliament से laws को पुनी थरे amend करि परिबो this is correct पार्लियामेंट अमेंड करि परिबो पार्लियामेंट रीएनैक्ट करि परिबो गोटे लॉज को जो थरे नेसेसरी चेंजेस दरकार पडुची टू रिमूव द कॉज ऑफ invalidity the executive is not accountable to the legislature under any circumstances this is false ऊपर हमें क्वेश्चन आ गोटे डिस्कस कले कना पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी रे एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहिले से माने कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लोकसभा fourth এটা incorrect হবো the legislature can impeach judges for proved misbehavior or incapacity এটা true and it comes under the article 124 clause 4 and 217 जोठी की जजेस माने रिमूव हे परिबे फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी एंड सेथि पई ताको रिमूवल पई की स्पेशल मेजॉरिटी दरकार ठीक अछि तो आंसर कोन हबो ओनली 3 Which of the following countries possess an unwritten constitution आ भितरु को कंट्री रो गोटे unwritten constitution अछि USA France United Kingdom India दीपांजलि सिन्हा कर आंसर करेक्ट अछि 7 रो सी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर अब यूके यूके कॉन्स्टिट्यूशन होचे अनरिटन काहेकि ना इट इज नॉट कोडिफाइड इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट Ninth question the constitution of India is described neither wholly rigid nor wholly flexible इंडिया रा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पूरी रिजिड की पूरा पूरी फ्लेक्सिबल नुहे कौन पाई की इट कैन बी अमेंडेड ओनली बाय रेफरेंडम some parts can be amended by ordinary law while others require a special procedure the judiciary can alter any provision through interpretation it can be changed only by a constitutional convention 10 seconds starts now आंसर हम बी किछि पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन रो से गुडी को ऑर्डिनरी लॉ द्वारा अमेंड करा जाई परिबो एंड किछि पार्ट्स पई के स्पेशल प्रोसीजर दरकार एक्सक्यूज मी अमेंडमेंट प्रोसीजर को लॉ अंडर रे आसे सॉरी को एक्ट अंडर रे आसे आर्टिकल को आर्टिकल अंडर रे आर्टिकल 368 अंडर रे एंड इट प्रोवाइड्स कि तीनटा वे रे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हे परिबो फर्स्ट होची सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट प्रोसीजर तीनटा पार्ट रे डिवाइडेड फर्स्ट पार्ट इट डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 368 बाकी दीटा पार्ट अंडर आर्टिकल 368 आसंदी आ गोटे होची स्पेशल मेजॉरिटी एंड आ गोटे होची स्पेशल मेजॉरिटी दरकार प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स ओके तो एटा कोन हैला एटा पार्टली फ्लेक्सिबल हैला कि किछि पई इजी अमेंडमेंट अछि आउ पार्टली रिजिड हैला काइना फेडरल फीचर्स जो माने रहिले दे नीड मोर अप्रूवल फॉर एग्जांपल फेडरल फीचर्स स्पेशल मेजॉरिटी दरकार आउ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स भी दरकार तांगो अमेंड करियो पई आंसर कोन बा आंसर बा बी
Some parts can be amended by ordinary law while others require a special procedure. Question number 10. Which of the following best describes a federal constitution? Statement number A. Statement A. All powers are concentrated in the hands of central government. Statement B. Power is divided between central and the regional governments, both being sovereign within their spheres. C. The central government controls states through the executive decrees. D. The local governments derive authority from the central legislature only. Answer of B. Power ta divide ହେଇଛି between central and the regional government and ଦିଟା ଯାକ sovereign within their spheres. Federalism ମାନେ କ'ଣ? What is federalism? Federalism ହେଲା division of power between two level of government. ଏଇଠି ଲେଖୁଛି division of power between two level of government. गोटे होची सेंट्रल आ गोटे होची स्टेट जाको रीजनल गवर्नमेंट भी कहताओ एंड से दीटा जाको लेवल दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विद इन देयर असाइन्ड फील्ड जहाँ जहाँ फील्ड बा टास्क तांको असाइन करा जायछि सेही स्फीयर रे दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. Question number 11. United Kingdom's constitution is best described as unwritten, rigid and federal. Option B, unwritten, flexible and unitary. Option C, written, semi-rigid and quasi-federal. Option D, enacted, rigid and monarchical. Answer of B. Unwritten, flexible and unitary. Unwritten कहीं ये गोटे डॉक्यूमेंट रे नहीं, फ्लेक्सिबल कहीं आर जो पार्लियामेंट रहिला से जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अच्छी से ताको इजीली अमेंड करि परिबो, सेति पई किछि भी स्पेशल प्रोसीजर नाही. देन यूनिटरी कोन पई कि जो पार्लियामेंट सी होची सुप्रीम यूनाइटेड किंगडम रे आउ तार पावर होची सेंट्रलाइज्ड. सो यूनाइटेड किंगडम फॉलोज पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी नॉट फेडरलिज्म. The Constitution of India can be best characterized as unwritten, federal and rigid, written, enacted and unitary, written, enacted and federal with unitary features, evolved, flexible and monarchical. Giving you 10 seconds. Answer number C. Written, enacted, federal with unitary features. Written कहीं ना single document जोड़ा adopt ही थिला 1949 रे सेठी सब mention अच्छी and enacted made consciously by the constituent assembly. Okay, not evolved, gradually এটা evolve ହେଇନି सेटा को enact करा जायछि, consciously enact करा जायछि by the constituent assembly. Federal with unitary features. Federal features जेमति कि division of powers हे गला, independent judiciary and dual polity एगुड़ा होछि तार फेडरल फीचर्स. एंड यूनिटरी जेमति कि सिंगल सिटीजनशिप, देन इमरजेंसी पावर्स एंड स्ट्रॉन्ग सेंटर एटसेट्रा एगुड़ी होछि तार यूनिटरी फीचर्स.
आंसर कोन बा आंसर हबो सी। थर्टीन्थ क्वेश्चन असर्शन कहला कि यूनाइटेड स्टेट्स रो कॉन्स्टिट्यूशन सेटा रिजिड इन नेचर रीजन होची कि तार जो अमेंडमेंट प्रोसेस जोडा रहिला इट रिक्वायर्स रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ कांग्रेस। जस्ट रीड द फोर ऑप्शंस एंड आंसर अकॉर्डिंगली इन द लाइव चार्ट। जे सी आंसर दोचंदी 12 रो एब्सोल्युटली करेक्ट स्वर्ण प्रभा दीपांजलि सिन्हा श्रीधर कोनर वेरी गुड। आंसर इज सी असर्शन ट्रू अछि किंतु रीजन तार फॉल्स। असर्शन ट्रू एथिपाई यूएस रो कॉन्स्टिट्यूशन सेटा होची रिजिड इन फॉर्मेट कहीं अमेंडमेंट प्रोसीजर तार बहुत डिफिकल्ट आमे ऊपर भी डिस्कस कले रिजिड आमे ताकू कहिताउ से कॉन्स्टिट्यूशन को जार अमेंडमेंट प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट थाए सिंपल प्रोसीजर थ्रू रु अमेंडमेंट कैरी आउट हुए नाही। तो एठी रीजन कहिला कि तार अमेंडमेंट प्रोसेस सेटा रिक्वायर करे कि रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजॉरिटी जदि सिंपल मेजॉरिटी रो रिक्वायरमेंट रही छि ताले सेटा रिजिड केमती हैला। सो द रीजन इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द assertion the reason एटी भूल हे जिवो। सो assertion is true but reason is false। 14th question consider the following statements regarding the classification of constitutions। A written constitution provides clarity and certainty in interpretation। Second statement, a flexible constitution ensures core principles remain unchanged। Third statement, a federal constitution necessarily requires a written constitution। Fourth statement, an enacted constitution is generally framed at a definite point of time by a representative body। Abidru ketri statement correct achi? Only one, only two, only three, all the four। Giving 15 seconds। फर्स्ट स्टेटमेंट कही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से गोटे क्लारिटी और सर्टेनिटी प्रोवाइड करे दिस इज ट्रू कहीं सब जक प्रोविजन जो गोटे डॉक्यूमेंट रे कोडिफाइड हो जाए तो इंटरप्रिटेशन बहुत इजी हो जाए और यूनिफॉर्म हो जाए। सो दिस इज ट्रू। A flexible constitution ensures core principle remain unchanged। नहीं flexible constitution रो माने हैला कि easily change हो परिबो by the legislature hence core principles may not remain constant। This is not correct। Federal constitution necessarily requires a written constitution। Federal constitution this is true कहीं written constitution set are necessary to clearly define the division of power between center and states। So this is true। An enacted constitution is generally framed at a definite point of time by a representative body। This is true कहीं जो enacted constitution रहला और consciously जहाँ को मैं enactment कहूँ और consciously framed constitution कहूँ they are created by constituent assembly। जेमती कि इंडिया 1946 to 49 भितरे constituent assembly constitution से माने enact कले तो आंसर कौन बा आंसर बा सी। Only 3 statements are correct। 15th question, which of the following best defines constitutionalism? आ भितर को स्टेटमेंट टा constitutionalism को बेस्ट वे रे डिफाइन करूची। A may mere existence of a written constitution in a state। B absolute power of legislature to make laws। C a system that limits governmental powers and ensures accountability under the constitution। D supremacy of executive decisions over the legislative control। आंसर बस सी
a system that limits governmental powers and ensures accountability under the constitution. Constitutionalism माने कौन? एटा होची गोटे आइडिया जे कि गवर्नमेंट रो पावर को लिमिटेड करे, जे कि कोई कि गवर्नमेंट पावर आर लिमिटेड अंडर द लॉ. एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एनश्योर कौन करे कि कौनसी भी ऑर्गन से माने आर्बिट्रारीली एक्ट करिवे नहीं. देन फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड केमती रहइबो, देन रूल ऑफ लॉ केमती प्रिवेल करिवो. दोज आर द फोकस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. It merely it is not about having just a constitution but about respecting its spirit. Answer about C. The essence of rule of law as a component of constitutionalism implies that the government can act arbitrarily if public interest demands. Option B, the law is above everyone including those who govern. Option C, the legislature can override the judiciary at will. Option D, the executive is free from the legal restraint. Giving 10 seconds. Read and attempt the question. The correct answer is B. The law is above everyone including those who govern. Rule of law जोड़ा constitutionalism रो गोटे component से कौन कहूची. And rule of law कहा द्वारा who coined the rule of law? By A.V. Dicey. Coined by A.V. Dicey. Rule of law माने हला no one is above the law. Then all actions of government must be based on law. गवर्नमेंट जहाँ भी एक्शन नब सेटा लॉ ऊपर बेस हेइतिबा दरकार. इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. ओके, द आंसर कौन हबो? लॉ इज अबव एवरीवन इंक्लूडिंग दोज हु गवर्न. 17th question. Which of the following articles of the Indian Constitution most directly upholds the spirit of constitutionalism by limiting governmental power? आ भितरु चारटा ऑप्शन भितरु को आर्टिकल टी कॉन्स्टिट्यूशन र से डायरेक्टली जो स्पिरिट रही छि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ताको अपहोल्ड करूची बाय लिमिटिंग द गवर्नमेंटल पावर. Options are Article 123, Article 14, Article 312, Article 360. आंसर हम आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ. आर्टिकल 14 एटा एंश्योर करे कि जो रूल ऑफ लॉ रहिला सेटा गोटे कोर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. इट एंश्योर्स दैट एंड इट गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ माने कोन नो आर्बिट्ररी एक्शन. and equal protection of laws. माने कौन फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट. Question 18. Mere existence of a constitution does not ensure constitutionalism. खाली गोटे constitution रहिले constitutionalism ensure हुए नहीं. It must be backed by constitutional culture.
ताको कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर बैकिंग मिलवा दरकार. दिस ऑब्जर्वेशन वाज मेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. एंड ए ऑब्जर्वेशन टी ए स्टेटमेंट बा ए ऑब्जर्वेशन आ भितर को केस रे एडा आसीथिला. केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, आरसी पोडियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आयर कोएलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. आंसर हम बी, आरसी पोडियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 1993 रे सुप्रीम कोर्ट एटा ऑब्जर्व करथिला कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सेटा केवल गोटे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नुहे, इट इज मोर देन दैट. इट रिक्वायर्स कल्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, accountability and respect for the institutions. याकु छाड़ी देले विदाउट दैट गोटे भलो कॉन्स्टिट्यूशन भी फेल हो जिवो. 19th question, which of the following features most accurately distinguishes constitution from constitutionalism? आ भितर को फीचर constitution को constitutionalism रो सेपरेट करे बा डिस्टिंग्विश करे. Constitution deals with procedure, constitutionalism with spirit and limitation of power. Constitution and constitutionalism are synonymous terms. Constitution limits government, constitutionalism only describes government structure. Constitution refers to conventions, constitutionalism refers to statutes. आंसर इज ए, कॉन्स्टिट्यूशनल डील्स विथ प्रोसीजर एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ स्पिरिट एंड लिमिटेशन. आमे आगुर भी बहुत थरा को डिस्कस कर सरलेनी. कॉन्स्टिट्यूशन होची गोटे स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट. स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट केमिति जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट रहिला से माने केमिति फंक्शन करिवे, तांकर पावर कोन हबो. एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कोन, एटा होची से स्पिरिट जहा कि एन्श्योर करे जो पावर एक्सरसाइज होची से माने केमिति विद इन लिमिट्स एक्सरसाइज हेबे for people's welfare. Twentieth question. Assertion: constitutionalism aims to prevent arbitrary use of power by any one organ of the state. Reason: judicial review empowers courts to strike down unconstitutional actions by executive or legislature. Giving 15 seconds for this one. assertion true अछि काना आमे ऊपर भी डिस्कस कले कि एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हैला कि केमिति ये आर्बिट्ररी पावर यूज को लिमिट करिवो. सो assertion is true. Reason it also explains the assertion. काहेकि ना जुडिशियल रिव्यू कहा अंडर रे आसे 13, 32, 226 ये कोर्ट को पावर दिए टू चेक एंड स्ट्राइक डाउन द अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट. आ एटा एन्श्योर करे कि कोनोसी भी ऑर्गन सी तांकर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट को एक्सीड करिवे नाही. ठीक अछि. सो जुडिशियल रिव्यू, दिस इज अ टूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ओके, आंसर कोन बा ए. #21. Consider the following statements with reference to constitutionalism in India. The principle of constitutionalism is implicit in the doctrine of basic structure. Article 13 and 32 plays a central role in enforcing constitutional limitations. Statement 3rd. Constitutionalism rejects the idea of limited government.
Statement 4, judicial activism has often reinforced the principle of constitutionalism. आ भितरु केतोटी statement correct अछि? Only 1, only 2, only 3 and all the 4. Answer abo only 3. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू कहीं जो डॉक्ट्रिन रहा बेसिक स्ट्रक्चर सेटा एंश्योर करूची कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स केमिति प्रोवाइड हबो हेंस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज इम्प्लिसिट इन इट. This is true. Article 13 and 32 they play a central role in enforcing constitutional limitations. This is true. They protect what? They protect fundamental rights and prevent unconstitutional laws or actions. This is true. कॉन्स्टिट्यूशनल ये लिमिटेड गवर्नमेंट आइडिया को रिजेक्ट करूची एटा फॉल्स हमें ऊपर भी डिस्कस कले कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सपोर्ट्स लिमिटेड गवर्नमेंट इट डजंट रिजेक्ट द आइडिया एटा फॉल्स जुडिशियल एक्टिविज्म से कौन करे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को से फर्दर स्ट्रेंथन करे कहीं से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को इट कीप्स चेक ऑन देम सो दिस इज आल्सो ट्रू ओनली 3 अब आवर आंसर 22 which of the following best defines microeconomics microeconomics को आ भितर कोडा best define करूची the study of national income employment price levels in an economy the study of behavior and decision making of individual economic units the study of government policies regarding taxation and spending the study of global trade relations between the nations answer कोन हबो 21 ର जो माने सी आंसर देछनी दीपांजलि सिन्हा absolutely correct very good दीपांजलि now read and attempt 22nd question answer is B microeconomics माने कोन माइक्रोइकोनॉमिक्स ये कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करे फॉर्म्स आउ केमिति प्राइसेस डिटरमाइन होची स्पेसिफिक मार्केट रे ताको भी स्टडी करे सो द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स ओके सो माइक्रो होची कोन स्टडी करे स्मॉल यूनिट्स जेमति हाउस होल्ड हे गला फॉर्म हे गला एंड मैक्रो कोन स्टडी करे मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज अ होल answer about B question number 23 the study of aggregate demand and aggregate supply primarily falls under aggregate demand और aggregate supply ର study कहा under रे fall करूची welfare economics under रे आसे कि micro economics बा macro economics and public economics आ भितर कहा under रे आसे आंसर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड आउ सप्लाई से गुडी को होची ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सो दे आर पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट माने कोन एग्रीगेट होची टोटल इकोनॉमी सो दिस इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कांसेप्ट 24th question which one of the following topics would not be studied under microeconomics under रे आ भितरु को टॉपिक ता आसीबनी price determination of coffee in India profit maximization output level of a firm equilibrium in the labor market for textile workers fiscal deficit of the government of India
Answer is D, fiscal deficit of government of India. Eta microeconomics under e asuni kind of fiscal deficit. This is related to government's overall budget. Overall budget sangre eta related. तो एटा माइक्रो इकोनॉमिक्स रे आसेनी, एटा मैक्रो इकोनॉमिक्स रो गोटे कांसेप्ट. ओके, फिस्कल पॉलिसी हे गला, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट जे बड़ बड़ टॉपिक्स अछि दैट कवर्स इकोनॉमी एज अ होल, सेटा मैक्रो टॉपिक्स. 25. Which of the following best explains the link between micro and macroeconomics? Both are completely independent of each other. Micro decisions collectively influence the macro outcomes. Macro policies determine micro consumer preferences. Microeconomics only deal with the theoretical analysis, while macroeconomics is empirical. B, micro decisions collectively influence the macro outcomes. कहना जो individual decisions रहिला सेही गुडी को ही aggregate हेगी macro trends form करे. ओके, माइक्रो डिसिजंस एग्रीगेट हेगी मैक्रो ट्रेंड्स फॉर्म करछि, जेमति कंजम्पशन हे गला बा इन्वेस्टमेंट हे गला. फॉर एग्जांपल जदि हमें टोटल सेविंग्स देखिबा, सेगुडी को कोन सम ऑफ इंडिविजुअल सेविंग्स. Question number 26. Which of the following is an example of macroeconomic issue? Option A, pricing of a product by a firm. Option B, household decision on saving versus spending. Option C, determining the market equilibrium for wheat. Option D, national unemployment rate. You have 10 seconds. अभी कोटा गोटे मैक्रोइकोनॉमिक इश्यूर एग्जांपल, वेरी इजी क्वेश्चन. आंसर अब डी, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट. Assertion: microeconomics and macroeconomics are interdependent branches of economic analysis. Reason: aggregate micro level decision determine the macroeconomic outcomes, and macroeconomic policies influence the individual behavior. This is an easy question, so I am giving 10 seconds to you to answer. Answer is A. Both assertion and reason are true. Our reason होची assertion ର correct explanation. आमे discuss कले कि micro macro से माने interdependent. ऊपर गोटे question रे individual behavior जो micro economics रोची, it shapes the macro trends. और जो macro policies रहिला से माने भी individuals मान को affect करूची. 28th number question. Consider the following statements regarding micro and macroeconomics. Microeconomic focuses on individual market and relative prices. Macroeconomics deals with the national aggregates such as GDP and inflation. Fiscal policy, it a microeconomic stabilization ro gote instrument. Theory of factor pricing forms a core part of the microeconomics. How many of the above statements are correct? So एठी मु ऑप्शन लिखि दउची. Only 1, only 2, only 3 and all. आ भितर कोटा करेक्ट हो? A, B, C, D. Answer अब C. Only 3. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू कहना माइक्रोइकोनॉमिक्स से इंडिविजुअल मार्केट और रिलेटिव प्राइसेस ऊपर फोकस करूची. सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू कहना जो मैक्रो डील्स रहउची, इट डील्स विद द एग्रीगेट्स लाइक जीडीपी हे गला, इन्फ्लेशन हे गला, इट डील्स विद द नेशनल एग्रीगेट्स.
फिस्कल पॉलिसी एटा माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन रो गोटे इंस्ट्रूमेंट नो इट इज फॉल्स ऊपर सिमिलर गोटे स्टेटमेंट आमे डिस्कस करिसे फिस्कल पॉलिसी होची मैक्रो इकोनॉमिक नॉट माइक्रो इकोनॉमिक ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट स्टेटमेंट नंबर 4 इज करेक्ट काइना जो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग फॉर्म्स इट कोर पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग कोन फॉर एग्जांपल वेजेस रेंट प्रॉफिट ओके आंसर कोन हबो ओनली 3 ऑप्शन नंबर सी according to law of demand other things remaining constant a as price rises quantity demand rises quantity demanded rises as price falls quantity demanded falls as price rises quantity demanded falls price and quantity demanded are independent answerable C as price rises quantity demanded falls kahingi na price and quantity demanded vitare inverse relationship achi between price and quantity demanded so jetebale law of demand amaro kon कहउची jetebale price fall करे setebale demand rise करे आरा किछटा exception अछि except given goods and Veblen goods. Law of supply chain explains which of the following relationships: inverse relationship between price and supply, direct relationship between price and supply, no relationship between price and supply, constant relationship between price and supply. आंसर इज बी डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई जो प्रोड्यूसर्स रहिले से माने दे सप्लाई मोर एट हायर प्राइसेस तो आ भीतर गोटे डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टाब्लिश होची एंड रीजन कोन से माने कोन पई हायर प्राइसेस रे सप्लाई बेसी करंती फॉर हायर प्रॉफिट मोटिव Question number 31. The downward slope of demand curve is mainly due to the law of diminishing marginal utility, technological improvements, government price control, cost push inflation. Answer about A. The law of diminishing marginal utility. Because जो additional unit रहिले each additional unit they give less satisfaction. So consumers माने कौन करंती जेतेबेले प्राइस कमी जाए they buy more only at the lower prices. When a fall in the price of coffee causes people to buy less tea, the two goods are said to be complementary, inferior, substitute, normal.
आर आंसर हम सी सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉफी रो प्राइस फॉल हेले टी रो डिमांड कमुची सो दे बोथ सब्स्टिट्यूट इच अदर तो जो माने टी प्रिफर करूथिले से माने एबे कोन जेतेबेले कॉफी रो प्राइस कमी गला से माने एबे कोन करबे कॉफी पीबे ओके सो दे आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर The intersection of the demand and supply curves determines marginal cost of production, equilibrium price and quantity, opportunity cost, elasticity of demand. Equilibrium माने कौन आंसर अब बी इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इक्विलिब्रियम माने कौन where demand equals to supply तो इंटरसेक्शन रे कौन होची मार्केट क्लियर होची इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी डिटरमाइन होची 34 assertion when the price of a commodity increases गोटे commodity रो price increase हेले तार quantity demanded decrease होची the reason है कि consumer माने diminishing marginal utility experience करूचंदी from successive units of a commodity answer is A assertion reason dita jaକ true अछि and assertion reason is the correct explanation of A law of demand कहूची law of demand कोन कुए कि जेतेबेले प्राइस राइज करे क्वांटिटी डिमांडेड एटा डिक्रीज करे एटा कोथि पई हुए बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जेतेबेले कि तमे बेसी कंज्यूम करो each extra unit gives less satisfaction ठीक अछि so you are willing to pay less the assertion is true and reason is the correct explanation of A 35th question consider the following statements regarding the law of supply and demand the demand curve generally slopes downward due to the income and substitution effects the supply curve usually slopes upward because higher prices provide an incentive to producers a shift in the demand curve can occur due to change in consumers income or preferences a move along the supply curve occurs when factors other than prices change आ भितरु केतटी statement correct अछि only one only two or only three all the four first statement is true कहीं ना downward slope एटा आसे कहीं income effect plus substitution effect पाई supply curve usually slopes upward because higher prices provide an incentive to producers this is true kind of upward slope जो था of supply it is due to the profit incentive
at higher prices. So this is also true. Third be true achi kind of a shift in the demand curve can occur due to change in the consumer's income or preference. Jetol income or preference re change ase the demand curve re shift ase. So this is true. Movement along the supply curve occur only when price changes, not other factors. So this is false. Only 3 are correct. Activities like agriculture, mining and fishing belong to which one of the following sectors of the economy? Secondary, primary, tertiary, quaternary. Answer is primary sector. B, primary sector. Agriculture, mining, fishing एगुड़िक कौन involve करछन्ती? They involve extraction of natural resources. Extraction of natural resources directly from nature. Okay. तो एमाने कहा अंडर रे फॉल करंती? प्राइमरी सेक्टर अंडर रे आसंती. Which of the following best describes secondary sector of an economy? Extraction of natural resources, processing of raw materials into finished products, providing information and knowledge services, offering public administration and policy making services. The answer is B. Processing of raw materials into finished products. जो secondary sector रहिला सेटा raw material को finished products रे convert करे. For example, iron ore into steel, बा cotton into cloth. So secondary sector कहा को cater करची? Industrial बा manufacturing sector को. The IT and software development industry in India falls under which of the following sectors? Primary, secondary, tertiary, quaternary. This is factual direct question. The answer is quaternary. Quaternary sector kono? It is knowledge based. Knowledge based sector which provides knowledge based services. जेमती कि IT हेगला, research and development भी जिबो, data analytics, data analysis, consultancy, etc. Software development. Okay. Tertiary sector को primary हमें discuss कले, secondary discuss कले, tertiary कोन? Tertiary होची regular services. जेमती कि banking हेला, but transport, trade. The quinary sector primarily includes workers engaged in agriculture and allied activities, factory workers involved in manufacturing, professionals in knowledge-based research and development, top-level decision makers in government and organizations. This is D. Top-level decision makers in government and organizations. ताकू कुआ जाउची quinary sector. Quinary sector को मान को cater करे जो top leadership positions रहले से मान को executive, policy makers, CEOs, ministers जो मानकर डिसीजन मेकिंग रोल रही तांको कैटर करछि. Which of the following statements best explains the shift in sectoral composition of developing economies like India? A gradual shift from the primary to the secondary and tertiary sectors, a shift from the tertiary to primary sector, decline of all sectors due to population growth, dominance of agriculture with no structural change.
आंसर इज ए ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स जेतेबेले इकोनॉमिक्स माने डेवलप करंती लेबर आउ इनकम जो लेबर एंड इनकम रहिला से माने एग्रीकल्चर रु मूव होंती इंडस्ट्री बा सर्विस सेक्टर आड़को सो द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एटा होची की साइन ऑफ डेवलपमेंट assertion कहिछि the tertiary sector contributes to the largest share of the India's GDP and the reason होछि the growth of IT finance and communication services has outpaced agriculture and manufacturing both assertion and reason true अछि काना जो इंडिया रा टर्शियरी सेक्टर से अराउंड 55 to 60% तो कंट्रीब्यूट करूची ही जीडीपी पाई एंड दिस इज ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ इन आईटी फाइनेंस टेलीकॉम एंड सर्विस इंडस्ट्रीज ओके सो सर्विस सेक्टर आम एटू कौन जानिले इट इज द लार्जेस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर in India. Consider the following statements regarding the sectors of economy. Primary sector forms a foundation of economic activity by providing raw materials to other sectors. Secondary sector contributes to value addition and industrial employment. Quaternary sector mainly involves manual and unskilled labor. The quinary sector includes leadership and top level policy making functions. Only one, only two, only three, all the four. I'm giving 20 seconds to answer this one. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू कहना प्राइमरी सेक्टर से गोटे फाउंडेशन ले करे से रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करे फॉर अदर सेक्टर्स सेकेंडरी सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द वैल्यू एडिशन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट okay via manufacturing so this is also true quaternary sector mainly involves manual and unskilled labors at a false kind of quaternary it involves skilled labor knowledge based work आमे ऊपर डिस्कस करचे नॉट मैनुअल लेबर सो दिस इज false quinary sector includes leadership and top level policy making functions this is true we have discussed it earlier only 3 the leaps 2025 initiative recently launched by government of India aims to enhance logistic performance and supply chain benchmarking, promote women entrepreneurs and startup incubation, facilitate large-scale employment in rural India, boost agricultural exports through cooperative networks. Correct answer is enhance logistic performance and supply chain benchmarking. So LEAPS 2025. LEAPS 2025 रो full form कौन? Logistics, efficiency, enhancement and performance standards. Name रू ही show होची 2025.
and aku eta co ministry under re launch hechi. It was launched under Ministry of Commerce to improve India's logistics sector. Okay, correct answer will be option A. The Odisha government recently approved the Godabarish Mishra Adarsha Prathamik Vidyalaya initiative for establishing model primary school across panchayats, setting up tribal hostels in forest areas, creating skill development centers in every block, promoting agricultural training institutions in the rural districts. You have 10 seconds to answer. आंसर हम ए एस्टाब्लिशिंग मॉडल प्राइमरी स्कूल्स अक्रॉस द पंचायत ओडिशा गवर्नमेंट जे कि इनिशिएटिवटा एजुकेशनिस्ट गोदावरीश मिश्र ऊपर रखा जाइछि टू क्रिएट मॉडल प्राइमरी स्कूल्स इन द पंचायत कोथि टू एन्श्योर क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल पंचायत तर ऑब्जेक्टिव कौन टू स्ट्रेंथन foundational education. Paradip Port was recently declared a national hub under which mission? PM Gati Shakti Mission, National Maritime Development Mission, Green Hydrogen Mission, Sagarmala Program. Excuse me. आंसर हम सी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पारादीप पोर्ट अथॉरिटी से फॉर्मली रिकॉग्नाइज करा जाइछि एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब green under National Green Hydrogen Mission in India. Okay. The Odisha Jan Vishwas Ordinance 2025 primarily aims to introduce new criminal justice reforms, ease business regulations and reduce compliance burdens, promote cooperative federalism in governance, strengthen Panchayati Raj and rural administration. Answer above B. Ease business regulations and reduce the compliance burdens. Odisha Jan Vishwas Ordinance 2025 जोटा कि ओडिशा कैबिनेट द्वारा अप्रूव करा जाइछि to decriminalize minor regulatory offences and streamline compliance across the state. तो एथिरे कोन होची रेगुलेटरी बर्डन को ईज करा जाउची फॉर बिजनेस एंड सिटीजन्स. टाइम TYME Tribal Youth Micro Entrepreneurship Program active through ITDA Rayagada primarily focuses on providing agricultural tool to tribal farmers, training tribal youth for self employment and startups, setting up cooperatives for tribal handicrafts, supporting tribal school education initiatives. आंसर हम बी ट्रेनिंग ट्राइबल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्टअप्स जो नेम रही ट्राइबल यूथ माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप से गोटे फोकस से करूची ऑन एंटरप्रेन्योरशिप जोटा कि कहिया गले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही फॉर ट्राइबल यूथ. सो द आंसर विल बी बी.
Retail inflation in India fell to 1.54% in October 2025, its lowest in 8 years, mainly due to decrease in industrial production, fall in global crude oil prices, food price deflation and stable energy costs, increase in the interest rate by RBI. C. Food price deflation and stable energy costs. According to data, जो India retail inflation रहिला September 20 October 2025 रे it fell to 1.54%, जोटा कि 8 वर्ष भितरे एटा lowest. ए decline टा कोन पई देखा जायछि? It is mainly attributed to food price deflation. Okay, food price deflation माने कोन? Food inflation turned negative and stable energy cost. Okay. Which international organization recently re-elected India as member to its governing body? Just a minute. United Nations Human Rights Council, International Court of Justice, International Monetary Fund Executive Board, World Health Organization. Answer about A. India ebe re-elect heichi to UN Human Rights Council. Okay, so reaffirming its global standing in promoting what? Democracy, rights, and inclusive governance. Ajira last question. Odisha was chosen as a leader in millet promotion across India. Reason kono? State has implemented large scale millet farming and nutrition programs benefiting small and tribal farmers. Answer is both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. Assertion कहिछि कि ओडिशा एबे as a leader choose करा जाइछि in millet promotion across India, जोटा कि true काहेकि ना ओडिशा it has been recognized in national schemes for millet promotion among the states. एडा करंट अफेयर्स अछि, जदि आपण मिलेट्स अराउंड करंट अफेयर्स कवर करथिबे देन जानि परिबे. रीजन कहिला कि ओडिशा implemented large scale millet farming and nutrition programs benefiting small and tribal farmers. This is also true. A state or strong tribal population achi, so millet farming initiatives bhi state carry out korchi to help them. And millets kaha under promote hochandi? Millets are promoted under the government of India's millet mission. Millet mission ta kahar part of PM's National Food Security Mission ra part. Okay, जे कि millets को encourage करे as nutri cereals. So that's all for today's class. Thank you everyone for your attention. That is it for today. 50 टा questions आमे एडी discuss कले, जो माने test देई नथिबे से माने reappear करि परिबे and time
वाइज जो मु टाइमर प्रोवाइड करूथली पर क्वेश्चन 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स ताकू टाइमर को फॉलो करिकी कमेंट सेक्शन भी से माने आंसर दे परिबे। ठीक अछि, थैंक यू।